No to Mr. Bezos and Mr. Zuckerberg and Mr. Ellison and all the other multi-billionaires. You cannot have it all. We will create an economy that works for all Americans, not just the 1%. Brothers and sisters, it is not just the authoritarianism of the Trump administration that we must combat. It is not just the oligarchs and their insatiable greed that we must combat. Now, as the news literally of today reminds us, we have got to stop the out-of-control militarism of the Trump administration, whether it is here at home in cities like Minneapolis and St. Paul or abroad. Let us be honest. The American people were lied to about the war in Vietnam. We were lied to about the war in Iraq. And we are being lied to today about the war in Iran. This war must end immediately. In the last election, Donald Trump pointed out correctly the huge amounts of money that had been wasted in wars that should have been spent rebuilding America. He campaigned as a peace candidate, and he promised no more forever wars. He lied. 1 month ago, Trump and his partner, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, started a war with Iran. This war is unconstitutional. Trump did not seek or receive authorization from Congress. This war is a violation of international law. One sovereign nation cannot simply go about attacking another sovereign nation for any reason it chooses. Since this war began, 13 American soldiers have been killed and hundreds have been wounded, including another 12 yesterday. In Iran, nearly 2,000 civilians have been killed and many more wounded, and 498 schools have been bombed by American and Israeli missiles. In Lebanon, more than 1,000 people are dead and more than 1 million Lebanese people, 15% of their population, have been displaced from their homes. In Israel, 20 people have been killed and over 5,000 wounded. In the West Bank, Israeli vigilantes are burning down homes and killing Palestinians. At a time when gas prices are soaring, when many Americans cannot afford the basic necessities of life, it is estimated that this war has already cost $1 trillion. At a time when the American people are politically divided, there is one issue that is bringing us together. Conservatives, moderates, and progressives are speaking out in unison: end this war.
And as a U.S. Senator, I want to just mention to you about what I intend to do about it. First, we have got to make sure that Congress does not send another $200 billion to fight this war. Trump's supplemental appropriation for the war in Iran must be defeated. Secondly, I will be forcing a vote in the Senate on legislation to block the sale of nearly $1 billion in weapons to the Israeli military for bombs and bulldozers. A nation, a government that has committed genocide in Gaza does not need more military support from American taxpayers. My fellow Americans, we are all proud to live in a country which throughout our history has inspired people throughout the world to struggle for freedom, for democracy, and justice. And we understand that when we stand together and not let demagogues divide us up, we can continue to inspire the world to believe in a brighter future. Yes, we can create a vibrant democracy by ending Citizens United and not allow billionaires to buy elections. Yes, we can create an economy that works for every man, woman, and child in our country, and not just a handful of billionaires. Yes, we can make certain that the revolutionary technologies of artificial intelligence and robotics are used to improve life for all of us and not just make the rich owners of that technology even richer. Yes, we can and must join the rest of the industrialized world and guarantee health care as a human right for all of our people. Yes, instead of spending $1 trillion a year on the military, we can wipe out homelessness and build millions of units of low-income and affordable housing. Yes, in the richest country on earth, we can have the best public educational system in the world, tuition-free from child care to graduate school. Yes, we can expand Social Security and radically improve our pension system so that every senior in America can retire with dignity. Yes, we can raise the minimum wage to a living wage and guarantee every worker the right to join a union. Yes, we can guarantee that every woman in this country has the right to control her own body. And yes, when billionaires are paying an effective tax rate lower than a truck driver or a nurse, we can and must make certain that the top 1% and large profitable corporations start paying their fair share of taxes. My fellow Americans, the establishment, including the corporate media and many of my colleagues in Congress, want you to believe that you are powerless,
They want you to believe that you cannot change the status quo, that because of their wealth and their influence, there is nothing you can do to combat them. But that is a lie. Throughout the history of our country, when Americans have stood up and fought for justice, they have prevailed. The founders of our country did it when they stood up to King George. The abolitionists did it when they ended slavery. The working class did it when they stood up to their bosses and formed unions. The suffragettes did it when they demanded that women have the right to vote. The LGBT community did it when they demanded basic human rights. Time and time again, in difficult moments in American history, our people stood up, fought back, and won. They did it then, we can and will do it now. Today, March 28th, 2026, millions of Americans are out on the street demanding freedom, democracy, and justice. But we must make certain today is not the end of our struggle, it is the beginning. Together, when we stand united, we can and will create the kind of nation that you and I know that we can become. Thank you all very much. And now, please welcome to the stage Congresswoman Ilhan Omar. Hello, Minnesota! अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स मिनीसोटा में नो किंग रैली से खिताब कर रहे थे। आपको बताएं कि ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका में नो किंग्स मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिससे खिताब में उन्होंने कहा कि हमें अमरीका में बादशाहत नहीं चाहिए। अमरीकी सेनेटर का इस मौके पर कहना था कि मुल्क में किसी बादशाहत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अमरीकी सेनेटर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमें अमरीका में बादशाहत नहीं चाहिए। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मुजाहिरीन से खिताब किया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर उनका कहना है कि वियतनाम इराक की तरह ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। बर्नी सैंडर्स ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वियतनाम इराक की तरह ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। हमें अमरीका में बादशाहत नहीं चाहिए। ईरान जंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सेनेटर की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि वियतनाम इराक की तरह ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। मुल्क में किसी बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने बबांग दहल ये बात कही कि ईरान जंग में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वियतनाम इराक की तरह ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। आपको वाज़ेह करते चलें कि बर्नी सैंडर्स की जानिब से खिताब में कहा गया है कि आज हमारा पैगाम है नो मोर किंग्स। हम अपने मुल्क में आमरीत नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। अमरीकी तारीख में पहले कभी किसी ने ताकत का इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया। एक शख्स ने मुल्क के कानून को हाथ में ले रखा है। अमरीकी सेनेटर ने वाज़ेह कहा कि ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकना होगी। ईरान में सैकड़ों स्कूल तबाह किए जा चुके। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके हैं।
जबकि हज़ारों ज़ख्मी हैं। ईरान जंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमें अमरीका में बादशाहत नहीं चाहिए, एक शख्स ने मुल्की क़वानीन को हाथ में ले रखा है। बर्नी सैंडर्स ने वाज़ेह तौर पर अपने खिताब में कहा है कि एक शख्स ने मुल्क के कानून को हाथ में ले रखा है। अमरीकी तारीख में पहले कभी किसी ने ताकत का इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। आज हमारा पैगाम है, नो मोर किंग्स। हम अपने मुल्क में आमरीत नहीं चाहते। ईरान जंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके, हज़ारों ज़ख्मी हैं। ईरान में सैकड़ों स्कूल तबाह किए जा चुके। ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकना होगी। ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वज़ीर आज़म ने शुरू की। हमें अमरीका में बादशाहत नहीं चाहिए, एक शख्स ने मुल्की कानून को हाथ में ले रखा है। आपको वाज़े करते चलें कि ईरान पर जंग मुसल्लत करने के ख़िलाफ़ बड़ा मुज़ाहरा किया जा रहा है, जिसको नो किंग्स रैली का नाम जो है वो दिया गया है। मुज़ाहरे से खिताब करते हुए अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि एक शख्स ने मुल्क के कानून को हाथ में ले रखा है। अमरीकी तारीख में पहले कभी किसी ने ताकत का इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। आज हमारा पैगाम है, नो मोर किंग्स। हम अपने मुल्क में आमरीत नहीं चाहते। ईरान जंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं। ईरान में सैकड़ों स्कूल तबाह किए जा चुके हैं। ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकना होगी। ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वज़ीर आज़म ने शुरू की। हमें अमरीका में बादशाहत नहीं चाहिए, एक शख्स ने मुल्की क़वानीन को हाथ में ले रखा है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने नो किंग्स रैली से खिताब में कहा है वाज़ेह तौर पर कि एक शख्स ने मुल्क के क़वानीन को हाथ में ले रखा है। अमरीकी तारीख में पहले कभी किसी ने ताकत का इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। आज हमारा पैगाम है, नो मोर किंग्स। हम अपने मुल्क में आमरीत नहीं चाहते। ईरान जंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं। ईरान में सैकड़ों स्कूल तबाह किए जा चुके। ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकना होगी। ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वज़ीर आज़म ने शुरू की। हमें अमरीका में बादशाहत नहीं चाहिए, एक शख्स ने मुल्की क़वानीन को हाथ में ले रखा है। मिनीसोटा में इस वक्त हज़ारों मुज़ाहिरीन सरापा एहतजाज हैं। वियतनाम इराक की तरह ईरान जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। बर्नी सैंडर्स की जानिब से वाज़े किया गया है कि हमें अपने मुल्क में आमरीत नहीं चाहिए। आज हमारा पैगाम है, नो मोर किंग्स। Dairy farm. This is what incompetency and unchecked power looks like. It is reckless, it is dangerous, and this is not what our country will stand for. But I still have hope. I have hope in every one of you that is here today. I have hope in people across this country. We are going to speak up. We are going to continue to show up because we refuse to believe in a future ruled by fear, corruption, and chaos. We are not a country of kings. We are a country of laws. We are a country where people look out for one another. And we are a country that will fight peacefully, powerfully, and persistently to protect our democracy. I love you, Minnesotans. Thank you so much for being out here. And now it is my honor. It is my honor to introduce a lifelong hero of mine. The incredible, brave, courageous Jane Fonda. आपको बताएं कि नो किंग्स रैली में इस वक्त हज़ारों की तादाद में मुज़ाहिरीन मौजूद हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि अब हमें जंग नहीं चाहिए। बर्नी सैंडर्स ने भी इस रैली से खिताब में कहा है कि वियतनाम और दीगर ममालिक में जंग के हवाले से ईरान में भी जंग के हवाले से झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग में अब तक मुतअद्दिद स्कूल्स और शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया है। And synagogues and clergy and neighbors, we are learning so much from you. Now when I point to you, you're going to say Minnesota, okay?
When people ask me how I know we will win, I have one word to say. When people ask me how I know love is stronger than hate, I say. When people ask me how nonviolence can win, I have one word to say. Thank you, Minnesota. Now, Becca Good, the wife of Renee Good, has asked me to read a statement, which I am honored to do. Hello, Minnesota. This is from Becca Good. I am so proud to call Minneapolis my home. I can't stop talking about how absolutely beautiful it is to see how Minnesota shows up. मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार